नमो विष्णुपादाय कृष्णातृष्टाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वल्पद्रव्यश्च विपत्सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. In these last few verses, there are two main considerations. दो पिछले कुछ श्लोकों में दो महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकाशित किया गया है. The beautiful form of the Lord and the process of yoga meditation. तो बहुत भगवान का सुंदर दर्शन और योग की जो प्रतिक्रिया है उसको वर्णन किया गया है. And here in this verse, Karma Muni combines both of them. तो ये श्लोक में योग की प्रतिक्रिया और साथ साथ में भगवान का सुंदर स्वरूप का ये दोनों तत्व इधर प्रकाशित किया गया है. Srila Prabhupada, in the previous verse, in the purport, he emphasizes the process of the real process of yoga. तो पिछले श्लोक में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य हैं योग का जो विधान हम करते हैं. And he emphasizes that the Patanjali system of yoga is the real system, which means deep meditation on the form of the Lord. तो वर्णन करते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान करना ये योग का वास्तविक सिद्धि है. One may ask, if he's such a great, powerful, why does he have to get married? तो अगर कर्दमुनि जो है वो बहुत ही महान योगी है तो उनको विवाह करने की क्या जरूरत है कि प्रश्न पूछ सकता है. Because such a powerful yogi, but actually he wasn't interested in getting married. तो ऐसे देखा जाए कर्दमुनि जो है वो उनका कोई विवाह करने में कोई रुचि नहीं था उनको. He was told by Lord Brahma to get married. तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको आदेश दिया कि विवाह करने का आदेश दिया. In the, I think it's the first or second verse in this chapter, Srila Prabhupada says that the purpose of this question is to find out how all this progeny came from Lord Brahma. तो ये पूरा इस अध्याय का उद्देश्य है ये जानने के लिए सारा जो सृष्टि हुआ है ब्रह्मा जी से कैसे हुआ वो जानने के लिए. So the Lord, he wanted progeny to be pure, especially in beginning the universe. तो भगवान चाहते थे कि संतान जो प्रजा की उत्पत्ति जो शुद्ध हो ये भगवान का ऐसा इच्छा था. And there were Prajapatis like Daksha. तो शुरुआत में प्रजापति दक्ष जैसे प्रजापति भी हुआ करते थे. So he wanted to appear himself, but he will appear himself only through his devotees. तो स्वयं प्रकट होना चाहते थे लेकिन वो भक्तों के रूप में होकर. And in the case of Daksha, although he has purity, he's very attached to the ritualistic activities and he's proud of his position. जैसे दक्ष जो है उनके पास कुछ तो शुद्धता थी लेकिन फिर भी उनको जो कर्मकांड के जो भगवान जो है वो कभी भी किसी काल में प्रकट नहीं होते. So Karma Muni having to get married for him was an austerity. तो कर्म मुनि के लिए विवाह का तपस्या था. When he first got married, he was living under a tree.
जब उन्होंने विवाह किया तो वो केवल एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। He was doing austerities. तो एक वृक्ष के नीचे निवास करके वो तपस्या कर रहे थे कर्दममुनि। And Devahuti was following him. देवहूति जो स्वयं जो है उनके अनुगत्य पश्चिमों में चलती थी। She was used to living in a palace and very comfortable situations. देवहूति को बहुत ही सुख सुविधाओं में बड़ा महल में रहने का उनका आदत था। But she realized that just like our philosophy teaches, the wife must follow the husband. तो जैसे हमारा सिद्धांत कहता है कि पत्नी जो है पति के अनुगत्य में, of course, she doesn't follow the husband to an impure or hellish situation. तो ऐसा नहीं कि एक पत्नी जो है पति को जब अगर नरक की ओर जा रहा है उसके साथ में वो भी नरक में जाएगी। She followed the husband to advance spiritually. तो एक पत्नी जो है पति का अनुगत्य इसलिए करती है ताकि वो आध्यात्मिक उन्नति करे। This is the whole purpose of marriage. तो यही है विवाहिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य। Everything in the life of a devotee is only for pleasing Krishna. तो एक भक्त के जीवन में हर एक कार्य जो है केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। So if one has material desire, at the same time wants to please Krishna, as it says, kama sarva kama va moksha kama jarati tivrena bhakti yogena, that one, whether one has desires or no desires, one should worship the Lord with all one's capacity. तो कामा सर्वकामो में कहा गया है कि भले ही किसी के पास इच्छाएं हैं या नहीं है, हर प्रकार की इच्छाएं कोई भी हो, कि किसी भी अवस्था में भी हो, अपने अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा में तल्लीन होना चाहिए। And therefore, Kardama Muni is showing us the perfection of married life. तो इसलिए कर्दममुनि जो है अपने जीवन अपने स्वयं आचरण के द्वारा अपने जीवन की सिद्धि कैसे प्राप्त किया जाए, उस तो श्री गौपाल जी ने कहा कि जो भी भक्त विवाह कर रहा है वो खास करके ये जो भागवत का ये प्रसंग है उसको अध्ययन करना होगा। But we see that when Kardama Muni saw that his wife was suffering, she was becoming thin, her hair was disheveled, he took compassion upon her. जब कर्दममुनि ने देखा कि उनकी पत्नी देवहूति जो है उनका जो बाल जो है उखड़ा हुआ है और वो तपस्या की वजह से बहुत ही कष्ट उठा रही है, तब देवहूति को देख के अनुकंपा उत्पन्न हुई। And he created a wonderful situation for her, which was not his inclination to use mystical power for creating some real situation. तो उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, उस दिव्य शक्ति के द्वारा उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सुख सुविधाओं के से परिपूर्ण व्यवस्था प्रदान किया। Srila Prabhupada says in the previous purport that generally yogis, they want to develop the siddhis so that they can have certain powers. They can use those powers for their own ego. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी जन जो है वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं अपनी जो महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। But he used power to serve a Vaishnavi. तो कर्दममुनि ने क्या किया, अपनी जो योगी शक्तियों को एक वैष्णवी की सेवा में युक्त किया। And she felt very bad that he's using his yogic power to make me more comfortable. तो जब देवजी को इस प्रकार की सुंदर वाला बहुत सुंदर महल वगैरह प्राप्त हुआ तो उनको अच्छा ही लगा कि मेरे पतिदेव जो है अपनी योगी शक्तियों को मेरी सेवा में लगा रहे हैं। But she was so humble and surrendered because he told her that after having one son, I will leave. तो बहुत ही नम्र थी, बहुत दीनभाव स्वभाव की थी, नम्र स्वभाव की थी, क्योंकि कर्दममुनि ने कहा था
कि आपको एक पुत्र हो जाए तो उसके बाद मैं अपना भवन में प्रवेश कर दूंगा. And she was thinking, to leave, let me help him. तो उसको Because he wants to leave very soon, so let me help him. तो वो सोचने लगी कि मैं वो तो जल्दी जाना चाहते हैं इसलिए मैं अपने पतिदेव को सहयोग करूंगी. Then I will accept to make myself very beautiful, so he will be attracted. Quickly we can have the son, and then he can go. तब वो देवी सोचने लगी तो अपने आप को मैं ऐसा सुंदर बनाऊंगी ताकि कर्तव्य मेरे प्रति आकर्षित हो और जिसके वजह से कोई पुत्र प्राप्त हो. जैसे पुत्र प्राप्त हो जाएंगे कर्तव्य जो है वो आध्यात्मिक प्रगति करने के वो आकर्षित लेंगे. So just see the service attitude between the two of them. तो हम देख सकते हैं देवी और कर्तव्य के बीच में एक सेवा की आदान प्रदान करने की सद्भावना. In Kali Yuga, marriage generally means mutual exploitation. तो कलयुग में विवाह का अर्थ है एक दूसरे को शोषण करना. ये कलयुग का विवाह का सिद्धांत बन गया. That's why Vaishnava culture is so beautiful, because it's mutual service. तो वैष्णव सिद्धांत इतना अद्भुत है कि एक दूसरे के प्रति सेवा के भाव को उत्पन्न करता है. So this is a very deep lessons that we learn how the subtleties of apparent feelings. तो हम देख सकते हैं कि व्यवहार के अंदर सूक्ष्म जो विचार है ये इनके इस प्रसंग से पता लगता है. How to convert even the most ordinary things into devotional service. हम देख सकते हैं कि एक साधारण का व्यवहार के जो बातें हैं वो भी शुद्ध भक्ति के प्रतिक्रिया में आ सकता है. Rupa Goswami has said, Iha yasya haredasya kamana manasa gira nikilas vasya vasta su jivan mukta sa uchete. In devotional service, even though their activities may look mundane, because kamana manasa gira, every action, word, and thought is dedicated to Krishna, that person is a transcendentalist. तो इस श्लोक में हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा ये वाला श्लोक में कहा गया है कि जो बाह्य रूप में जो भौतिक है ऐसा दिखने वाली है उसको भी भगवान की सेवा में लगा के उसको दिव्य बना सकते हैं. So therefore, Kardama Muni is saying here that now he's just speaking about the beauty of the Lord. तो कर्तव्य जो है खास करके इस श्लोक में भगवान की सौंदर्य के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं. First of all, he takes a humble position. तो पहली बात है कि कर्तव्य जो है बहुत ही नम्र स्थान को स्वीकार कर रहे हैं. He says through many successive births of deep meditation, speaking about the position of a yogi, the advanced yogis may aspire to see your form. तो कर्तव्य इस बात को कहते हैं कि अनेकों सालों का ध्यान योग के द्वारा आपके जो दिव्य स्वरूप को दर्शन करने का इच्छा प्राप्त करता है. Otherwise, he's saying, I was also in that category. No. वो कहते हैं कि दूसरे it is said by Shukadev Goswami that Mother Yashoda, with a stick, achieved more than all of the great yogis through great meditation. तो दामोदर लीला में ऐसा वर्णन आता है यशोदा माई ने ये एक छड़ी के द्वारा उन्होंने अन्य बड़े-बड़े योगीगण जो हासिल नहीं कर सकते उस स्थान को उन्हें प्राप्त किया. And Queen Kunti says how mysterious it is that person whom fear personifies fears is afraid of Mother Yashoda. How great is she? तो कुंती देवी इस बात को कहती है कि जो स्वयं भय जिससे भयभीत हो जाता है वो अभी यशोदा को देख के भयभीत हो रहे हैं. And here he's saying that by your mercy I have achieved the perfection of my eyesight. तो इधर कर्तव्य कहते हैं कि आपकी कृपा से मैंने अपनी आंखों की सिद्धि जो है उसे प्राप्त किया है. It's like we just chanted idam devapur nata gopala balam. जैसे हम अभी गा रहे हैं गोपाल That
The only thing I want to see is your beautiful Bal Gopal. मैं खाली आपका जो सुंदर बाल गोपाल का जो स्वरूप है उसका ही दर्शन करना चाहता हूँ, कोई इच्छा नहीं है। People nowadays are fascinated by so many things in material nature. तो भौतिक प्रकृति में अनेकों चीजों को दर्शन करने में लोग नालायक हैं। They have now Discovery Channel. You can see some fish with 25 eyes or some big strange-looking creature under the ocean. तो ऐसा एक चैनल है डिस्कवरी चैनल, उसमें कुछ जो है कोई ऐसा मछली है जिसके पास 25 आंख है, कोई ऐसा महान चीज है, कोई जानवर है, उसको देखने में लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। But here we see Anganiyasya Sakalendriya Vritti Manti. We see the Lord's form contains everything and can do anything. तो अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं जिसका हर एक अंग जो है अन्य अंगों का कार्य कर सकता है, यानी ऐसा स्वरूप है जिसके अंदर हर अंग हर प्रकार का कार्य कर सकता है, ऐसा स्वरूप हम दर्शन कर पाते हैं। When Lord Brahma began his prayers, he said, "Your form is very bewildering." तो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे भगवान, आपका जो स्वरूप है वो बहुत ही आश्चर्यात्मक है। You're standing before me with butter in your hand and a herding stick in the other hand. You look like a small child. तो आप एक हाथ में मक्खन लेके रखे हो और दूसरे हाथ में जो छड़ी लेके रखे हो, आप एक साधारण सा बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हो। But now I have learned that this apparent child form is full of so many potencies. I will never think that way again. तो अभी मुझे पता लगा कि जो आपका बाल गोपाल स्वरूप जो है उसके अंदर अनेकों अचिंत्य शक्तियां हैं। इसके बाद ये दर्शन करने के बाद मुझे वापस में आपको साधारण का बालक के रूप में देखूंगा नहीं। Even though Lord Brahma offered such beautiful prayers, actually Krishna was more satisfied with Indra than Brahma. तो भले ही ब्रह्मा जी ने बड़े अद्भुत प्रार्थनाओं को उन्होंने भगवान की स्तुति रूप में गाए, लेकिन फिर भी इंद्र से ज़्यादा पसंद थे भगवान, ब्रह्मा से ज़्यादा इंद्र से ज़्यादा पसंद थे। Brahma just tried to do a little mystical trick, but by doing so he separated Krishna from his friend. तो ब्रह्मा जी ने केवल ऐसे अपनी योगिक सिद्धियों को प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम क्या था कि वो कृष्ण को अपने ग्वाल वालों से वो अलग किया। And Indra, even though his intentions were so evil, he brought all of Krishna's devotees together. So Indra actually, although he intended to chastise the Vaishnavas and the residents of Vrindavan, he actually gave them transcendental bliss beyond their expectation. So he's saying that seeing you is the greatest perfection of life. Seeing your form, Akila Sattva Rasahe, is the reservoir of the perfection of the mode of goodness. And it also gives one the greatest pleasure. So Lord Brahma, in his Brahma Samhita, he has glorified the form of Krishna so wonderfully. Vainum Konantam, that Krishna is always playing his flute. And Aravinda Dayalaksham, and his beautiful lotus eyes are the most wonderful thing that we can behold.
वेणु का गान करते हो और साथ साथ में आपके जो आँख है वो अरविंद कमल के समान है। Actually, Shukadeva Goswami criticized the Keshi demon because he saw Krishna's eyes, but he wasn't attracted. And therefore he said he's the greatest fool. No. तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो केशी नामक जो राक्षस है उसको असुर है उसको निंदा करते हैं, कहते हैं इतना सुंदर स्वरूप को देखने के बाद भी उनको कृष्ण की आकर्षण नहीं हुआ, तो इस जात के बड़ा मूर्ख है। And then Lord Brahma says, with his beautiful peacock feather, his dark transcendental form is so pleasing. तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि उनका जो सुंदर दिव्य स्वरूप जो है वो सबको मोहित करने वाला है। Jiva Goswami, when he explains these prayers, he says that just like when you see a rain cloud, which is the color of Krishna, it brings a cooling effect. Just like the rain cloud, when you see it, you know that it will become cool. So when we see Krishna, it cools our passion and our ignorance, so that bhakti can arise. जैसे हम तप्त समय में गर्मी के समय में अचानक बादल को दर्शन करते हैं, हमारे आंखों को हमारे जीवन को शीतलता जिस प्रकार वो बादल प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे चेतना में रजस भाव का जो गर्मी है उससे हम शीतलता प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का महत्व की स्वरूप का दर्शन करके। Actually, sometimes we say that the Brahma Samhita commentaries are by Bhakti Siddhanta, but they're not. कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर ने ये ब्रह्म संहिता के जो व्याख्यान किए, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं किया। It is a commentary by Jiva Goswami, which is commented on by Bhaktivinoda Thakur, which is translated by a disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati. वैसे देखा जाए ये जो व्याख्यान है ब्रह्म संहिता, व्याख्यान से जीव गोस्वामी पाद ने किया और उसके ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने व्याख्यान किया, उस व्याख्यान का अनुवाद श्री भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर के शिष्य ने किया। Just some information. No? ये आपकी जानकारी के लिए। So, and then Lord Brahma says, Alola Chandrakala Sadvanamaldi Bhamsi, that Lord Krishna has this beautiful locket and garland of forest flowers, meaning this is taking place in Vrindavan. These prayers are not coming from the beginning of the universe. It's when Lord Brahma realized that Krishna is Vrindavan Krishna. तो ब्रह्मा जी ने ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जो कर रहे हैं वो कृष्ण कहाँ के कृष्ण है, भजन कृष्ण वृंदावन के कृष्ण है। ये वो स्थिति नहीं है जब सृष्टि के समय विष्णु का वर्णन नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भजन कृष्ण का स्तुतियाँ कर रहे हैं। Otherwise, how could Lord Brahma become bewildered if he already had realized that Krishna was Vrindavan Vasi? No? तो अगर वृंदावनवासी करके ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ है, तो फिर वो मोहित कैसे हो सकते हैं? And Ratnagadam Kali Pranaya Kali Kala Bilasam, that with his beautiful flute decorated with jewels and his hands decorated with jewels, he is engaging everyone by the playing of his flute in loving transcendental pastimes. वो करारविंदों में खास करके अनेकों रत्नों के द्वारा विभूषित हो, वो करारविंद से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं, वो ध्वनि जो है सभी का चित्त को आकर्षित करता है, सबका मन को हर लेता है। So I just wanted to read one verse by Rupa Goswami which illustrates that. तो रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचित एक श्लोक को मैं वर्णन करना चाहता हूँ, जो इस सत्य को प्रकाशित करता है। Smiram Bangitraya Parichitam Sachi Vistirna Drishtim, that this is one gopi speaking to all the other gopis.
एक गोपी जो है और एक गोपी से संवाद कर रही है that there, Krishna is standing in Govinda, Govinakyam Haritanum Itakeshi Tyuto Pakante. He is standing in Keshi Ghat, this Govinda, and he has his flute, playing his flute, his beautiful threefold form, and giving sidelong glances to all of his devotees. तो केशी घाट में भगवान खड़े हैं और तिरछी नजर से और अन्य गोपियों का वो देख रहे हैं Ma prakshishtas tavayadi saki bandhu sange stri ranga. That if you have any material desires, don't go near there because he will ruin them for you. Krishna will destroy your material life. He is Manohar, he will take your mind. Chitta Hari, he will take your heart. Therefore, sometimes devotees, they pray to Krishna, please take away my material desires. Not this one, and not that one. These 3 or 4, leave them, please. No. But Krishna doesn't work like that. No. He says, you know, if you want my mercy, you will get my mercy. No. Yasyaham anugrina taddanam janai. That if we beg Krishna for special mercy, he will give us his mercy by taking away everything, every obstacle in our devotional service. That's why sometimes devotees struggle in their spiritual life. Because they want to love Krishna, they see Krishna so beautiful, but they have these anarthas. No. So when Krishna applies anartha nivritti in our lives, especially through the agency of Sri Guru, sometimes we resist. Why is this happening? Why is it so difficult? No. तो हमारे हृदय में जो अनंत है वो गुरु के माध्यम से कृष्ण उसको उठा के देखते हैं उसमें भक्त ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है ऐसा क्यों हो रहा है And the reason is because I am a Vishaya addict. No. कारण क्या है हमारा संघर्ष हमारा कष्ट का कारण यही है कि मैं विषयों के प्रति बहुत आसक्त हूँ यही समस्या है I am addicted to material existence. And therefore, Shukadeva Goswami terms it as Bhava Roga. This is the disease or the addiction of I can't give up this material existence. I want to give up half of material existence. All the suffering part, I want to give that up. No. But the material happiness part, oh no, I don't want that. So sometimes the example of chicken is used. I use the example of the cow. No? Because we don't eat eggs, so we're better the cow example. No, we want the milk, but we don't want to feed the mouth. No. Therefore, to enthuse us to feed the cow, all the demigods have invested their potencies
in mother cow. तो सारे देवता एक गोमाता में सब अपना निवास स्थान बना के रहते हैं. So therefore, we see there's some piety because people want to. They like very much rituals because it's mechanic. तो Mechanical. प्राय लोगों के मन में एक ये जो रिचुअल्स जिसको हम रीति रिवाज करते हैं वो उससे ज़्यादा आसक्त रहते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक तरीके से उसको बार बार किया जा सकता है. यांत्रिक प्रवृत्ति रहता है उसके अंदर. Nobody wants to enter into deep meditation on Krishna like Karda Muni. तो karda muni जैसा भगवान कृष्ण के स्वरूप में पूर्ण तरीके से मग्न होकर स्मरण करना ये नहीं चाहते. We want to do some mudras, and I see people that come to the temple, they have all these different mudras, like you move their head this way and go like this 20 times. We want it to be something mechanical. तो जो आते हैं कुछ मुद्राओं को वो ज़्यादा उसके आसक्त होते हैं क्योंकि उनके मन में एक यांत्रिक प्रवृत्ति है. We don't want to offer dandavats and say, Krishna, today I'm offering everything to you. हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि भगवान को धन्यवाद करके ये नहीं कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण मैं सब कुछ भगवान को नहीं कहना चाहते. We may do that ritualistically, but then when we get up, we have a different opinion. तो हो सकता है कि औपचारिकता के रूप में हमने धन्यवाद किया और बोल भी दिया भगवान मेरे तरफ कर दिया, लेकिन जैसे आप खड़े हुए तो कुछ और प्रवृत्ति होता है मन में. And also with our japa, we have to offer dandavat. भले ही हम जब तक इस समय में हमको धन्यवाद करना चाहिए. Not let me get these 16 rounds out of the way so I can do what I want. ऐसा नहीं कि हम 16 वाला कैसे कभी कर दूंगा बाद में मैं जैसे चाहे वैसे करूंगा. So therefore Kardama Muni is inspiring us. We must meditate very deeply in Krishna. He did it for 10,000 years. We do it at least for 2 hours. तो कर्दम मुनि जो है उनसे कुछ लेने चाहिए कि सरकार भगवान को ध्यान करना है तो प्रेरणा दे रहे हैं कर्दम मुनि वो 10,000 साल तक के कि हम तो कम से कम 2 घंटे कर सकते हैं. And then manmano bhavamat bhakto mam yaji mam namaskaru mam vaishasi yukta evam. Then we do it with all of our activities, all of our thoughts, all of our words, all of our deeds. That we offer all of them to Krishna. This is a meditation. तो जिस 2 घंटा जो जैसे समय ध्यान करेंगे भगवान के ऊपर तो हमारे जो हर प्रकार के जो कार्य है उस कार्य में भी भगवान को ध्यान करते हुए समर्पण कर सकते हैं. We have to be careful not to convert it into some automatic pilot. That I do this, but I'm thinking about something else. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो करते करते जा रहे हैं एक यांत्रिक रूप में यंत्र के रूप में हम भक्ति का कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और विषय के बारे में सोच रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. We say to our mouth, you chant, and so I can think of something else. हम ये नहीं कहेंगे मुख को हे मुख हे सुहा जब करो हे मन कहते हैं कि अच्छा काम करो तो अपना काम करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. Therefore Prabhupada said, move your lips, feel the japa on your hands, engage all of your senses in this japa meditation. तो भगवान कहते हैं कि अपने होठों को द्वारा कृष्ण का नाम हरे कृष्ण उच्चारण करते ही समय आप अपने जो माला है उसको स्पर्श करके उस स्पर्श का अनुभूति भी करो. If you're cooking, do it like Mother Yashoda. No, not that you're cooking and thinking about I have to go do this and that. No. How will this please Krishna? How can I do it so perfectly? How can I get the best milk? How can I get the best spices? Just like Raghava Pandit, he would go walking for kilometers just to get the best boga for cooking for Krishna. जैसे जब आप भगवान के भोग बनाओगे बड़े ध्यान से बनाना चाहिए जैसे यशोदा माई करती है. जैसे राघव पंडित जो है बहुत सुंदर अच्छा भोग प्राप्त करने के लिए वो मार्केट में बाजार में वो बहुत सारे चल के जाके ढूंढ के ले जाते. Even Mahavishnu, he's very anxious to get darshan of Krishna. तो ये महाविष्णु भी स्वयं महाविष्णु जो है वो भी बहुत ही
आसक्त हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मैं कभी कृष्ण दर्शन करूं। Vismapanam swasya cha subhagha ride. That even the Lord himself wants to take darshan of this beautiful form of Krishna. तो स्वयं भगवान भी उनका ये अपना ही दर्शन करने के लिए बहुत ही लालायित है। Even Balaram, the direct expansion of Krishna, wants to see Krishna, wants to serve Krishna. तो स्वयं बलराम जी जो भगवान कृष्ण के ही विस्तार है, वो भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। He doesn't need it for his purification like us. बलराम जी को अपनी शुद्धिकरण के लिए भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हमको आवश्यकता होती है। So therefore we have to learn to want this. I want to serve Krishna. I want to please Krishna. इससे हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई इच्छा होना चाहिए, मुझे कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होना चाहिए। Tatra laulyam api ekalam. That intense greed to want to please Krishna. हमारे मन में एक प्रकार की लोभ होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने की। And then our spiritual life will be successful. तब हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। So what Kardama Muni is doing here and saying here, he's enthusing us to do the same. तो इधर कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं वही कार्य करने के लिए। So these are some thoughts on this verse. ये कुछ मेरे विचार हैं इस श्लोक के ऊपर। Any comment or question? कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, टीका टिप्पणी है? I think. हाँ, पूछिए। His question is the attachment for material things. In spite of all my endeavors, it's not doing. What to do? Chant more. If Srila Prabhupada, all of our acharyas, and Krishna himself says they will go away. No? हमारे आचार्य, आचार्य गौतम जी और कृष्ण स्वयं जब इस बात को कहते हैं कि ये भौतिक आसक्तियां चली जाएंगी, तो वो बोल रहे हैं तो वो जाएंगे। Just like we can't think that this process doesn't work. हम ये नहीं कह सकते कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो काम नहीं कर रहा है, जब ये बात नहीं कह सकते। Better we should think, I don't want it to work. No. I don't want it to work because then I won't be able to enjoy my material life. भक्ति का प्रतिक्रिया हमारे पर कार्य नहीं करती, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम चाहते नहीं कि वो प्रतिक्रिया हमारे पर कार्य करे। And Krishna says how it will work. No. Sarvanamam paticha jamamekam sharanam vraja. That's how it works. No. You take all of your dharmas and you offer them to Krishna. That's what it means. Dharma paritya means you take your dharma, you're not getting rid of them, you're purifying them. तो अपने सारे जो धर्म हैं भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे तो हम उनसे जो हमारे धर्म है उसको नाश नहीं कर रहे बल्कि उनको शुद्ध कर रहे हैं। It's not that I give up my kula dharma, get rid of my wife and children. No, you serve them as Vaishnavas. तो आप अपना जैसे कुल धर्म को त्याग नहीं करना है या सहज धर्म को त्याग नहीं करना है, तो क्या करोगे? अपने जो धर्म है, पारिवारिक धर्म है, व्रत धर्म है, उसको भगवान का समर्पण करोगे। कैसे समर्पण करोगे? अपनी पत्नी को वैष्णवी के रूप में मानकर के सेवा करोगे। Not that I just provide the material necessities for them. ऐसा नहीं कि केवल मैं उनके भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। But I will become a pure devotee and inspire them. ऐसा नहीं कि इस भाव से हमको अपने गृहस्थ जीवन में
व्यवहार करना चाहिए कि मैं उनका शुद्ध भक्त में बनूंगा और जो मेरे परिवार वाले हैं उन सबको मैं प्रेरणा प्रदान करूंगा. Just like if a doctor, and why is it difficult? Because just to be a doctor, you have to study for 8 to 12 years. अगर किसी को डॉक्टर बनना है, वैद्य बनना है, उनको 8 से 12 साल पढ़ना पड़ता है. And that includes the previous 12 years of study to be able to begin your doctor studies. तो ये भी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति वो डॉक्टर बन सकता है. उसके पहले 12 साल जो है उनको ऐसा अध्ययन करना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करे. So if it takes 24 years to repair a body, how many years to repair the soul? देखिए, अगर आपको 24 साल लगता है पढ़ाई का शरीर को ठीक करने के लिए, अब देखो आत्मा को ठीक करने के लिए कितना साल लगता है. So we shouldn't think that it's not happening. We should think, I am getting the highest perfection. How much will I have to invest to achieve it? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये जो बच्चे कार्य कर रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन इससे हमको ये ध्यान रखना होगा, हमको ये हृदय की शुद्धिकरण को प्राप्त करने के लिए हमको कितना मेहनत करना होगा, वो उसकी विचार करें. So it's just that sometimes we forget that in Krishna consciousness we are achieving the highest perfection, and therefore if it takes, as Srila Prabhupada said in his Vyas Puja, if I know it will take crores of births to achieve your devotional service. No. तो एक बार श्रील व्यास पूजा में बता रहे थे कि अगर मुझे करोड़ों जन्म लेना पड़े तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ. We can't think, well, I've been serving Krishna for 10 years and I'm not experiencing prema bhakti. Something must be wrong with the process. No. तो मैं 10 साल से जो है कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रेम प्राप्त हुआ. ऐसा लगता है कि ये जो विधि जो है भक्ति साधना भक्ति उसमें कुछ गड़बड़ है. Just like Mukunda, when it came his turn to see Lord Chaitanya, for Lord Chaitanya to reveal his eternal relationship, he said, "Oh Mukunda, I don't want to see him." No. So, उन्होंने अपना भक्ति का व्यक्त करने के नाम करने के आए, महापुरुष लेने के लिए आए. उससे महापुरुष ने कहा कि दृष्टा करीब है, उनको देखना नहीं चाहता हूँ. He said, Mukunda, he has one hand on my feet and another hand on my throat. No. तो जितने महापुरुष कहते हैं कि मुकुंद जो है एक हाथ जो है वो मेरे चरणों में रखा है और दूसरा हाथ जो मेरे गला दबा रहा है. Sometimes he's associating with the Vaishnavas and sometimes he's associating with the Mayavadis. तो ये के साथ कभी रहता है और साथ में जाके और मायावादियों के साथ जाके बैठ रहा है. And therefore I won't see him. तो इससे मैं उसको देखूंगा. And Shiva said, and Mukunda was hearing this and he was thinking, my life is finished. But Shiva said, my Lord, he is your great devotee. And Lord Chaitanya thought, okay, after millions of births I will see him. And Mukunda began to dance in ecstasy. Only a few million births and I can get the Lord's blessing. So that's how grateful we should be for whatever drop of mercy we get from Krishna. Very inspiring class. Thank you very much. The question is how to Yukta Vairagya in this particular incident. Yukta Vairagya and this Kardam Muni's narration here. How to understand? How to harmonize? आपका प्रश्न ये है कि युक्त वैराग्य नाम सिद्धांत है उसका और कर्दम मुनि का
जो प्रसंग अभी चल रहा है उसका कैसे समन्वय किया जा सकता है? So what was it? How did he change? What? How did Govinda? I didn't understand fully. His question. Yeah. His question is the Yukta Vairagya principle. How is it correlated with the prasanga, the story of? How is it related? Yukta Vairagya and Kandamuni's story, life. How is their relation? who is related to who? Yukta Vairagya. Oh, Yukta Vairagya. Yukta Vairagya. How is it related to the story of Kardamuni? Kardamuni? Oh, Yukta Vairagya, because Is Kardamuni getting married and he engaged his wife in Krishna service, yoga. How do you understand the principle of Yukta Vairagya? Yes, because he was a yogi, you would expect him to renounce everything. No, but he renounced his yoga meditation to serve his Vaishnavi wife. तो वैसे देखा जाए अगर योगी है तो सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। देखिए उन्होंने अपनी योग बल जो है जिसको उन्होंने प्राप्त किया था उसको अपनी पत्नी की सेवा में लगाया। So Yuka Vairagya is actually something very difficult. It's not something easy. Because Yuka Vairagya means that we use so many things in Krishna's service, but we have to, and not that we use it in Krishna's service so I can enjoy it, but only for Krishna's enjoyment. Not so easy. हम अनेकों भौतिक वस्तुओं को तत्वों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? ताकि मैं प्राप्त हो उसके लिए नहीं, कृष्ण सुख मिले इसके लिए लगाते हैं। Okay, I think maybe one more question we have to. Okay. हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। आपके कर्दमनी और देवभूति माता के जो प्रसंग है, तो देवभूति माता साध्वी है और पतिव्रता स्त्री है, और उनके पति जो है एक महान साधु है। और जो समाज में हम देखते हैं जिस माता साध्वी है पर उनके पति जो है भक्त नहीं है, तो उस स्थिति में पति का किस प्रकार अनुगमन करें? His question is that Kardamuni was a great devotee and Devati was following in his footsteps. But these days we find this is not the same case, that the husband is very sinful, and in that case, what should the wife do? Well, Karma Muni was, he was, he understood that his son was the Supreme Personality of Godhead, and therefore he wanted to give him the opportunity to, otherwise, what can I do in the presence of the Lord? How can I protect my wife better than the Supreme Personality of Godhead? तो कर्दमनी के मन में विचार था कि मेरे से भगवान से बढ़कर मेरी पत्नी को कौन देखभाल कर सकता है। तो जीवन में इस प्रकार का विचार था कि भगवान स्वयं जो है वो मेरी पत्नी को देखभाल करे। Because he knew that the Lord wanted to reveal devotional service to his mother. तो कर्दमनी को मालूम था कि मेरे भगवान जो है वो शुद्ध भक्ति का जो तत्व है वो मेरी पत्नी को वो प्रकाशित करना चाहते हैं। And he was also, he also wanted to show the principle that when the son is qualified, the father should leave home. तो कर्दमनी ने ये सिद्धांत की स्थापना किया कि जब कोई पुत्र अभी युक्त होता है तो वो पिता को अपने वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। So generally, he leaves home when the son is growing up.
तो प्राय ऐसा होता है कि जब पिता पुत्र बड़े होने के बाद पिता जो है वो घर को त्याग करके जाते हैं. But Kapila Dev is Purusha Purana. He is the oldest. You know? He's already old as soon as he's born. He's the oldest. कपिल जो है वो पुरुष पुराण है. His question was, Yeah. these days the husbands are not like Abdul. What should the wife do? He is very sinful. That is his question. If Wife is sadhu and devotee. Wife But is is not a devotee. devotee. Wife is a devotee. Husband is a very sinful person. Not devotee. Not devotee. And then what is she supposed to do? don't get married. Find a devotee husband. That's what you should do. Make sure you have the right husband and the right wife. No. But sometimes it may happen that either the wife or the husband, either way, is not a devotee. No. तो ऐसा हो सकता है कि कोई पत्नी जो है वो पत्नी हो सकती है, पत्नी बच्ची हो सकती है, ऐसा हो सकता है. Actually, Prabhupada's sister, her husband was a non-devotee. तो प्रभुपाद जी की जो बहन है उनकी जो पति है वो भक्त नहीं थे. But she was serving him. She was even cooking fish for him, although she would never eat it. No. तो वो क्या करते थे, उनको सेवा करते थे. कभी उनको ये मछली पका दी, कभी वो खुद ही खाती थी. And he was a little bit like Kamsa. When he saw her doing some nice service, he became a little soft-hearted and he gave up eating fish for some time. तो थोड़ा कंस जैसा था वो, समझ गई है वो. देखा कि उनकी पत्नी जो है कुछ सेवा कर रही है, तो उसको देख के उनके हृदय में थोड़ा सा दया आई और कुछ समय के लिए मछली खाना बंद कर दिया. But his demoniac mind began to preach to him, no, you must have fish. No. तो वापस उनका जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया और बोलने लगा वापस खाना है. But then he left, and she went to the family temple and served Govinda for the rest of Radha Govinda for the rest of her life. मृत्यु हो गया और पूरा बाकी जो जीवन है वो राधा कृष्ण जी का सेवा में संलग्न हो गया. So Prabhupada gave the ideal example of a responsible devotee man, and his sister gave the perfect example of a devoted wife. If the husband's gone, then this didn't work, let me serve Krishna. No. तो प्रभुपाद जी ने एक आदर्श पति का आधा निभाया. और प्रभुपाद की जो बहन है, आदर्श पत्नी को कैसे होना चाहिए उसका उन्होंने आदर्श प्रकाशित किया. Of course, Bhaktivinoda Thakur, his wife died, and he married again. लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर जो है उनकी पत्नी उनका मृत्यु हो गया था, उसके बाद उन्होंने वापस विवाह किया. Because he had a small child. क्योंकि उनके पास छोटे बच्चे थे. And then he had many children. No? उसके बाद उनको बहुत सारे बच्चे थे. But all of them were devotees. लेकिन अब सभी भक्त. He knew we may not be so perfect, but at least we should make sure whatever we do, it is only for Krishna's pleasure. That should be the motivation. भले ही हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध कोई नहीं है, फिर भी हमको इतना विचार रखना चाहिए जो भी मैं करूँगा कृष्ण को प्रसन्न करूँगा. So, well, okay, one quick question. Thank you very much, Maharaj. So very nicely you brought out that the mood in which Radhamani and Devati was like, it was mutual service. And at present, because of the influence of Kali, the mood in the marriage is mutual exploitation. So, in this connection, when the devotees society, also husband and wife are devotees, the mood of mutual exploitation, how can it be reduced and how can the service, mutual service can be increased? We can throw some light on it.
तो प्रश्न ये है कि महाराज जी ने कहा कि मुनि और देवती का जो संबंध था एक दूसरे को परस्पर सेवा करने की भावना थी। तो ये कलयुग में ऐसा स्वभाव होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे को शोषण करने की स्वभाव होता है। भले ही भक्त है हो जाते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के बीच में परस्पर उनको शोषण करो इनको शोषण करोगे ऐसा सोचते हैं। तो फिर इसको कैसे निराकरण किया जा सकता है वो प्रश्न है। They have to read the Srimad Bhagavatam together. तो साथ करके भागवत पढ़ना चाहिए। Then they will know what is the right attitude to have. They will develop this desire of serving one another. तो तब भागवत पढ़ने के द्वारा एक दूसरे को सेवा करने की जो इच्छा है वो जागृत होती है। So this is, of course, it's not easy, but because the attraction between man and woman is very strong, and there are biological and psychological impulses. तो ये जो बात है उतना आसान काम नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक कुछ वेग होते हैं। So we try to use those. We try to purify those impulses. तो हम ये जो शारीरिक और मानसिक वेग है उसको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। But at least if we have the goal in sight, we have to become a faithful servant of one another. Then it will happen by hearing, by chanting, by experience. विश्वास रखते हुए भागवत के ऊपर और श्रवण कीर्तन का विधि विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हृदय में जो वेग है वो शुद्ध हो जाएगा। So we just follow the process that Srila Prabhupada gave us sincerely and fully, and everything will fall in place. तो प्रभुपाद जी जो विधान दिए हैं वो बड़े श्रद्धा के साथ हमको इसको पालन करेंगे तो हर चीज जो है अपने अपने स्थान में स्थित हो जाएगा। And if the other person doesn't change, Prabhupada said, then you lead them. You leave them. If the other person doesn't want to change, you should leave them. तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मान लो कि इस समय के अभ्यास के बाद प्रयास के बाद अगर दूसरा व्यक्ति अगर सुधरने के तैयार नहीं है तो उनको छोड़ दो। But don't leave them for a better option, like a newer model. No. तो उनको दूसरा और कोई पत्नी या पति को प्राप्त करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। You leave them for Krishna. तो कृष्ण के लिए छोड़ दो। Not let me change. Prabhupada said, if we simply go from one person to another, it's like monkeys in the trees. No. तो हम एक पत्नी या पति को छोड़ के दूसरे के पास जाना ये बंधन का स्वभाव है। Of course, I know some very senior devotees who couldn't find the right person, but when they did, they became very serious. No. मैं ऐसे कुछ भक्तों को जानता हूँ बहुत वरिष्ठ भक्तों को जब उनको एक सही व्यक्ति मिले तो वो बहुत ही गंभीर हो गए भक्ति में। I think we'll have to stop here. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada.